Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So Saad Maniar joined Pakistan Air Force in G13 but graduated with 69 GDP. Soon he left the Air Force due to sad demise of his father and took over his family business. The brokerage house was established in 1948 by his late grandfather Muhammad Ali Maniar, who was among the founding members of Karachi Stock Exchange and a close associate of Qadir Muhammad Ali Jinnah. He remained the vice president of the exchange for 19 years until his retirement from business in 1966. His son, Mr. Saleh Maniar, joined the business and became a member in 1951. He was actively running the affairs of the brokerage house until his demise in 1982. Saad Maniar has to take over his family business as a result. Since then, he has been actively involved in business affairs of the brokerage house as well as the Karachi Stock Exchange. Mr. Saad Maniar has been member of board of directors of exchange and a number of times since 1986, and he held various portfolios including being the chairman of computer committee, chairman of modernization committee, rules and regulation committee, new product committee, and treasurer of Karachi Stock Exchange. He also has the honor of being the first chief executive officer of the Central Depository Company of Pakistan. Thank you very much, sir. Over to you now. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let us start the presentation on the topic of the presentation is investment in the capital market of Pakistan. First, we'll talk about what our capital market is. Background we've already done. So the capital markets are basically for the investments. And we have, वैसे तो बहुत सारे होते investments हैं market में, but generally we can bifurcate it into two types of investments. One are the productive investments and the non-productive investments. The non-productive investments are like investing in real estate, land, which may give you a good return, but in terms of production, it does not give you anything. Whereas investment in direct investment in industries, in the equity, is a productive investment because it creates wealth, it creates growth, and it creates employment. So capital markets also channelize the capital for industrial ventures. So we will call this as a productive investment. Now, capital market is, broadly speaking, it's basically capital markets is a marketplace where buying and selling of financial instruments takes place. The financial instruments could be bonds, it could be shares. And in the financial market, especially in the exchange, basically the predominant player is the product is the equities market, but debt securities are also traded, which we call them as bonds also, which are fixed income securities. And these fixed income are of types that they have a maturity period or redemption period or a convertible option. Like some of these bonds, they are converted into an equity after some time. And people who do not wish to convert them, they can redeem them. Now the type of capital markets. I'm going through these things initially so that you just have a feeling, and then we'll come to the capital market of Pakistan and have a informal discussion after that. नहीं अच्छा है सर, बेहतरीन है. ठीक है ना? In the primary markets वो होती है जहाँ पर where the equities are issued or bonds are issued to the companies, to the investors through direct placements or through underwriting. And primary markets allows companies to raise capital before initiating an IPO, initial public offering.
to receive as much direct financial commitment as possible. And after, what happens is that some companies, once they get some direct placements, the leftover is then offered through an IPO. And once the IPO is complete, then it is listed on the exchange. When it's listed on the exchange, it comes into the secondary markets. And what is the secondary market? Secondary markets is a marketplace where these equities are traded. These equities have already been issued in the primary market through the IPO or through direct placements. But now, when the other person wants to buy or sell, it is done in the secondary market, which is the stock exchange. The purpose of the secondary market is to create liquidity and security so that the investors can easily get in and get out. So by this way, you mobilize fresh investments also, because some companies require some liquidity, they require some cash by issuing of rights to fulfill their financial needs. And these markets provide an easy exit if the investor wishes to exit from the market at the prevailing market price, and if he feels that, and if he desires to. The features of capital market of Pakistan. Deals in long-term investments. Long-term investments are basically bonds, and it brings together the borrowers and the lenders. And the advantage is that it is regulated by the frontline and the apex regulators. The frontline regulator in case of the exchanges is the stock exchange itself, and the apex regulator is the SECP. And it utilizes intermediaries. These are the stock brokerage companies. And because of these intermediaries, what happens is that they bring in the buyer and the seller on a floor. On a floor means on the trading system, which determines the price of that commodity or that equity. And it determines the capital formation rate. This provides, the capital markets provide liquidity to the industry. They have a variety of instruments. Like I mentioned earlier, there is this primary market where the capital is issued and the secondary market where it is traded. These are the features of the capital market, generally anywhere, also of Pakistan. Who are the participants in the capital markets of Pakistan? The participants are the investors, the pension funds, insurance firms, banks, charitable foundations, endowments. On the other side, the investment managers, the fund managers, asset managers, wealth, hedge funds, private equity, venture capital, investment banks. And the issuer of are the users of the capital market, which includes companies that issue the capital, banks, government agencies, and the infrastructure where it is traded are the exchange, the central depository, which it is a depository and a custodian of these equities. And the other important participant is the National Clearing Corporation, which does the settlement. So these are the main participants in the capital markets of Pakistan. Now we talk about the Pakistan capital market structure. The capital market structure of Pakistan consists of, on top is the apex regulator, that is the SECP, which controls all the exchanges and the companies that are listed there,
also the unlisted companies. They have to be registered with the SECP, the Securities and Exchange Commission of Pakistan. We'll focus on the capital market structure. Now comes the Pakistan Stock Exchange. Earlier, it was Karachi Stock Exchange, which is the main stock exchange of Pakistan, basically. And then there was this Lahore Stock Exchange and Islamabad Stock Exchange. They were all merged. And I think it was about 2017 or 15, and it became Pakistan Stock Exchange. Now, Pakistan Stock Exchange is the frontline regulator of the equities market. And it also provides a trading platform for equities trading, mainly equities trading. Then we have the Mercantile Exchange, which is the commodities trading market. We have the CDC, which is the custodial, provides the custodial services, and National Clearing Corporation, NCCPL, which is a clearing and settlement company for equities business. And we have this structure further includes the intermediaries or the market participants, such as the stock brokerage firms now known as the track holders, who handle the transaction of shares in the stock market on behalf of the investors. Now, we just have a look. These are just numbers, basically comparison what all happened. I think we'll skip through this. These are some things that you will find everywhere. How the markets went up, they came down because of the pandemic, etc., etc. What happened between the Saudi-Russian conflict, the trade war and the COVID-19 pandemic, how it drove the market up and down. Pakistan's equity market development during financial year 2020. The fiscal year 19 and 20 started with stabilization program of the IMF. The austerity measures and the state bank's double-digit policy rate hurt the investors' confidence in the first quarter of 2020 because the interest rates were probably one of the highest in the region, to the tune of almost 13, 14, 15%. And for the consumer, it came to about 17, 18%. Adding the plus what you call after the Karachi interbank rate. So it was not conducive for any business to survive. So that shattered the confidence, and the market couldn't go up. So there was, but later on, probably the government realized, and they started this downward drive of reducing the interest rate. And this drove the market on an upward trend and on a path to recovery. We had a problem due to the COVID, but initially Pakistan took good control of it, and our markets also started to recover. Our businesses started to open. Now there is a problem also, but inshallah, we hope that the vaccine has come. So I feel that things will get under control. We received, I think we received the first batch of vaccines about 4 or 5 days ago. And inshallah, in 1 or 2 months, I think we'll be on the right track. We're not too bad as compared to other areas of the region. This is just a comparison. I think these are just numbers. What you see is the index, where it was and where it went, how the market capitalization reduced in 2020, and again now it's improved if you see the latest numbers. This is just a report which the stock exchange issues on a daily basis, that how many individuals, how many companies, how many banks, and like how many individuals, companies, banks, DFIs, mutual funds, their daily buying and selling positions. Just something which you can find on the screen every day. The Lippy net is the local investors here, and FIPPI is the foreign investors. So these just are terminologies I want you to be as familiar with, because these change every day.
Now here you can, there's one thing that needs to be noted here is, I'll just show you this, that the total number of listed companies. In 2015-16, it was 559. This figure was much higher. It was close to 700 in probably 2008, 2008, it was around 700. But many companies got delisted or but they defaulted. So they were taken out of the listed companies list. So you see here in 2015, it was 559. Instead of growing, just one company growth is not growth. I would say there should be a 10%, 5% growth every year, but it's not happened. As a matter of fact, this number has receded. You see, from 559, 560, then 558. 2018, 544, and 2019, 530. So the number of this is of concern that the number of listed companies has gone down in 5 years from close to 559 to 530, almost 30 companies are gone, 29 companies are gone. The market capitalization is also down, but the current, we feel that it's going, this is also due to our rupee devaluation. And the values in the stock market otherwise also went down. So, but we feel that with the present trend, this capitalization will improve. What do capital markets do? The capital markets help to channelize savings to the most productive investments. In 2020, Pakistan's capital markets faced challenges on multiple fronts: high inflation, austerity measures, oil price crash, COVID pandemic jolted the market. Pakistan's benchmark KSE 100 recorded the modest growth of 0.61 in the first 10 months of financial year 2020. The index kicked off with 33,900 points on July 1st and reached year's peak at 43,218 on January 13th, 2020. But then again, there was a drop. The pandemic came in and there was a substantial drop in the market. After the COVID-19 outbreak, capital began flowing out. The foreigners left the market also, but all their sales were absorbed by the local financial institutions, insurance companies, mudarba companies, and mutual funds. The government's stimulus package provided relief to investors as the KSE index gained 6,877 points. That is about 25% since March 25th, and the index closed at 34,111 points on April 30th. That is in a period of few days. Similarly, the market capitalization again increased by 991 billion. That is 18% since March 25th, during this period from March to April 30th. This is what has happened is that due to the COVID outbreak, the market was collapsing, but the stimulus provided by the government, the market bounced back to a certain level. Now, SECP has also taken a number of measures to facilitate the market to absorb the prevailing shocks. What they've done is that the duration of the index-based market halt has been increased from 45 minutes to 60 minutes. This is the time where when the markets closed, an average time of 30 minutes was taken, and the averages of those last 30 minutes were considered to be the closing index points. Now what they've done is from 45 minutes, they've increased it to 60 minutes. So it has to be an average of 60 minutes. So the closing rate of the index
for index to trade, you see, then you have to maintain an index for that for that level for at least 60 minutes in order to close at that level. SECP has also notified the corporate rehabilitation regulations to 2019 and corporate restructuring companies rules to 2019. These are for the sick companies so that they could restructure themselves. Now the introduction of circuit breakers and market halts. We've always had circuit breakers for the last, I think earlier there were no circuit breakers, but in close to 1987-88, circuit breakers were introduced, whereby it was 5% or 1 rupee, whichever was higher. The circuit breaker is when a company goes up or it goes down to the level of 5%, it is blocked at that rate until it's settled. Because if it's going up, no further activity will take place that day until such time that those trades have been settled. Or when it goes down, till such time these trades are settled, only then fresh transactions can take place. Please note down the questions. If there's any ambiguity, just note down the points so that I can, come back to you towards the end of the discussion. Then what SECP did other than that for the brokers was also to introduce a minimum commission rate also. Earlier, these commission rates were much higher, like 20 years ago, it was close to 0.75% or 0.5% at least. But recently, in the recent past, the commission rates had gone down so drastically that it was very difficult for a brokerage house to sustain itself, to do all the compliances, because there's a cost involved in compliances also. So what the SECP did was that they made a minimum brokerage commission of 3 paisas per share. Even if the share is for 5 paisas, you'll be charged 3 paisas, and 0.15% of the traded value, whichever is higher. This is the minimum rate. But they've also put up a cap also, maximum allowable commission rate of 2.5% of the traded value. So like I mentioned, it was aimed for ensuring the quality of brokerage services provided by the security brokers. Now, in order to enhance the security of the investors' assets with the security brokers, regulatory framework for new broker regime has been introduced, involving categorization of security brokers according to their financial resource and governance standards. Under these revised regime, only security brokers having the requisite net worth, corporate governance, and compliance standards and rating requirements shall retain custody of investors' assets. What this means is the brokerage houses who have the desired governance standards and financial standing would only be allowed to retain the customers' shares in their account, custody of the investors' shares. Moreover, the small sized brokerage houses shall retain limited custody of assets. They would be allowed a limited custody of assets and accordingly would be subjected to reduced regulatory requirements. And the ones who are custodians of larger assets would be subjected to substantial regulatory requirement. The SECP approved amendments in the National Clearing Corporation of Pakistan's regulations to remove practical difficulties and introduce reforms in the margin financing system. The brokers were allowed where they may extend financing to their customers by executing bilateral financing agreements with banks to pledge 75% margin finance securities by broker, extending financing from their own resource in favor of
NCCPL to meet margin requirements against exposure in ready markets, subject to fulfillment of additional conditions of net worth, credit rating, and statutory auditors' requirements. What happens is that other than depositing, the first part is that they are allowed to provide financing from their own resource through their banks to the customers, and the conditions are laid down by the frontline regulator also. The additional condition include net worth of more than rupees 250 million. This is the minimum for, and a credit rating of long-term A- or a short-term A2 rating, and having a statutory auditors of category A from SBP panel. An auditor of category A from State Bank panel of auditors has to audit and give his rating. This SECP has reduced some of its fee, and so did CDC and NCCPL for maximum facilitation of the market participant. Earlier there was no fee, but later on, I'll come back to SCCP introduced its fee in probably 2006 and 7. They started charging some fee from the trades that were done on the floor of the exchange, but now they've reduced. CDC also has a fee, but CDC has reduced its charges. NCCPL has also reduced its charges for facilitation of the market participants. And now we come on the safeguarding of investors' interest. The SECP made necessary regulatory amendments in the Pakistan Stock Exchange regulations to streamline claim verification process in case of defaulter broker by including mandatory requirements to engage independent experts and completion of process with prescribed time. Well, the problem is that independent people do not have the expertise to do such thing. Only the market participants are the best to do it. But anyway, now let's say further regulations governing customer compensation funds have been amended to rationalize disbursement limits for enhancing investor protection. What happens is during when there's a default, though luckily we've not had a default for quite some time. So these funds are given by the fund that we create by giving a certain fee from every trade that we make to the exchange. So that they use that for the investor protection. Wider investor outreach and investor facilitation. In order to enhance investors' outreach, the exchange has implemented a framework to enable online account opening. Further, to increase the retail base, a simplified account opening process has been introduced for low-risk investors, whereby maximum limit of Sahulat account has been enhanced from 500,000 to 800,000. Practical issues of market participants in meeting Know Your Customer KYC requirements related to the launch of centralized Know Your Customer organizations, CKO, have also been addressed through the requisite amendments in the regulations. If there are anything regarding this, the minor details I can let you know later. Okay. Measure to improve liquidity. In order to enhance trading capacity of the market participants and improve liquidity, the SCCP has approved amendments in the NCCPL regulations for discontinuing 10% additional margins being collected from brokers and 10% additional haircuts being applied by NCCPL on margin eligible securities. These are the margins that they have reduced to promote the participants of the market. Furthermore, slabs of liquidity margins have been revised, which would now
be applicable only on large exposures of brokers. In addition, the security deposit requirements have been reduced and the pool of eligible collateral against margin requirements has also been increased. Capital market reforms and development activities. These are regarding the deliverable futures, what we call the futures market that we have. And the futures market that we have is a deliverable futures market. That is, towards the end of the future, for example, it's of the contract, those shares are deliverable unless they are squared. If one, I'll give you a simple example. If one purchases, let's suppose 10,000 shares of a certain company in a contract, November contract, towards the end of the November contract, he will receive those shares if he's purchased them towards the end of the November contract. So the future trading are basically, we have the deliverable futures market. So various measures were taken to enhance activity in the DFM segment, such as permitting release of 50% mark-to-market profit in deliverable futures contract market on a T+1, that is trade plus one basis, and inclusion of closeout mechanism for managing risk. Further, the PSX regulations were approved for short selling. This is what we call the blank selling in DMF to address practical difficulties being faced by market participants. What you need to do is that you have to, the blank selling is that you have to inform the exchange. You enter the trade through another key so that the exchange knows that it is a blank selling. This another thing about the capital market reforms and development activities. Some more measures. Reporting mechanism in deliverable futures segment has been improved to resolve practical issues of market participants. Simplification of listing requirements and reduced documentation. Inclusion of more financial institutions as clearing members in the NCCPL. Increase in the pool of eligible collateral for risk management by the NCCPL. More shares and more eligible collateral has been allowed by the NCCPL. Improved disclosure requirements, especially for related party transaction. Related party transactions are those transactions, for example, the transactions that are being done by the directors of a listed company between them. So these are the related party transactions. Removal of requirement to place quarterly financial statements on website by brokers. Requirements to submit specific pledge authority to the bank in case of each pledge transaction has been relaxed upon request of market participant and replaced with one-time pledge authorization and submission of declaration by the broker to the respective pledgee on a fortnightly basis. So some things to ease of doing business has been done. Requirements for opening branches by securities brokers have been rationalized. Following measures have been taken for the development of primary capital market. Introduction of growth enterprise markets at PSX for facilitating companies that do not meet the prescribed criteria for regular listing at the PSX but are aspirant. Amendments in the public offering regulations 2017 to simplify the process and promote capital formation. Implementation of second phase of the centralized electronic IPO system, whereby the track holders brokers would be allowed to submit applications on behalf of the clients in an IPO to raise funds through capital markets. Presently, it is allowed, but there is a limit, a minimum limit of funds that you could apply for directly on behalf of your customers. So I think these would further be reduced, I believe. Notification of rating and investment information
Information Incorporation, Japan, as an internationally recognized foreign credit institution under Regulation 4G of the Credit Trading Companies Regulation for the purpose of entering into a joint venture or technical collaboration arrangement with any credit rating company in Pakistan. This is a information. Now, let us conclude. During 2020, the capital markets, we all know, witnessed wide fluctuations due to the reasons that were mentioned. The debt market witnessed an outflow after the pandemic, but what has happened, the positive thing is the reduction of the interest rates, investment from fixed income securities, cash deposits, etc., is being redeemed and it is entering the capital market. Pakistan's stock market has so far shown resilience to global shocks. Stability on the macroeconomic front is crucial for the capital markets. Environment of low and stable inflation, moderate external borrowing needs. These are the factors that has also helped the stock market. These factors also facilitate steady growth and reduce uncertainty, which encourages investments and demand for external finance. The government is gradually easing the lockdown to invigorate the economy. However, much will depend on the data on the epidemic, and in case of COVID-19, rises exponentially. So if this happens, then the capital markets may face a challenging time. But I suppose that with the vaccine coming in, we may be able to control things. Oh, we will show this later. Now we come to this, that how to invest in the stock market. Questions and variations in decision making of investments. You have to, if you want to invest in the stock market, it's different for a different person. So what you do is you have to draw a personal financial roadmap, like how old are you? You have to evaluate your comfort zone in taking of risk. Are you a risk taker? Are you a gambler? Or you're a safe player? So you're going to manage your investments accordingly. For example, you're a risk taker and you're a younger person. So you have limited funds. So what you can do is that it is in your nature that you can take risk. So you are going to invest in those scripts that are volatile. But if you need steady growth, you're dependent on your investments, then you will go in stocks that have maybe a lower payout, but they are stable. Like which have a definite returns, like these, what do you call these companies? Like the electric companies and the gas companies, the utility stocks. Now you have to, and for that you can consider an appropriate mix of investments. What is an appropriate mix of investments is that some part of your investments can come in the capital market and some can go in the fixed income securities, like we have khas deposit in Pakistan, or in bonds. So that a part of your investment gives you a fixed return, and the rest you can put in growth oriented returns. So a mix of both is going to protect you also and give you better return also. The other thing is, don't put all your eggs in one basket. By this I mean is that not only in one company, but also in one sector. For example, cement is doing well, so you put everything in cement. What you need to do is diversify a little. And if your investments are doing well, but you need to
always consider rebalancing your portfolios occasionally, because sometimes what happens is that certain sector of the market, you see, it starts to perform well, and the other sector starts to other sectors' performance starts to go down. So you need to monitor that which sector is non-performing. So you have to rebalance the portfolio occasionally. The last thing is that you have to create and maintain an emergency fund. For example, you're going to retire. You need money for from your medical needs. So for that, you have to put in a certain amount of investment in that emergency fund, and the rest what you can which you can access immediately. The rest you can put in long-term investments. So basically, these are some things that I have. If you have questions, if I can answer them, I will answer them. If I'm not able to answer them, I will get back to you. I will write them down, but get back to you after due consultation. So Saad bhai, this is Suhail. Not that I wasn't impressed by you before. Now I'm totally floored. So thank you very much for great presentation. Thank you. कुछ एक आध सवाल है, आपने सारी चीजें तो कवर कर ली बहुत अच्छी. कुछ सवाल तो वैसे ही जवाब मिल गया. Hello Sadiq, I can see your lovely face as well. So for the larger audience, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं साद की कंपनी में investment कर रहा हूँ for the last about 35 years. So obviously very happy with the performance, and he's a great advisor, as well as tell you where the pitfalls are and where the risks are. तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं एक चीज जो आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं आपको फोन करके या टेक्स्ट करके कह देता हूँ कि भाई मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम इस सेक्टर में कर दो या यहाँ पर कर दो, एंड यू टेक केयर ऑफ दैट इजीली. बाकी जो लोग नए इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए मैकेनिक्स बताइए जरा सा कि क्या होगा, कि फंड कैसे जाएंगे, कैसे ये ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, वो जरा सा बताएं जो आपने मेरे लिए फैसिलिटेट कर दिया था. तो दैट्स वेरी इजी फॉर मी. नाउ आई गो ऑनलाइन, डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. तो एक नए इन्वेस्टर के लिए हाउ दे कैन, बिकॉज हम लोगों को ये चाहिए होता है ना, बुढ़े हो गए सारे, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट किए तो देखते हैं अच्छा कल 1 लाख था तो आज 1,01,000 हुआ या नहीं हुआ. I understand. सर आप ये बुड्ढे वाला लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल. ऑब्जेक्शन. अच्छा, इसमें ये है कि what one can do is that जो अब requirements हैं उसमें ये है कि उसमें हमारे यहाँ बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट्स भी हो गई हैं, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं which we are trying के जो ऑफशोर लोग हैं उनके लिए कुछ हम ऑनलाइन ही इस सिलसिला कर लें कि वो अकाउंट्स उस तरह खुल जाएं. But we have a mobile trading app. We have an online trading system. I've put the website. On this you can find out a few things, but or कुछ नहीं हो तो contact us के अंदर जाके just type in what you require and we will help you and we will support you. कि किस तरह अकाउंट खुलता है बेसिकली उसके थोड़े से, क्योंकि अकाउंट खुलता है फाइनल अप्रूवल जो आता है वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी से आता है अकाउंट खुलने का. You have to fill in the form. We will open an account with CDC. We will open an account with our brokerage house, and we will do our due diligence, the KYC, and then send it to the national clearing. They will verify. We also verify the fingerprints from NADRA and the ID cards from NADRA, but but the national clearing also does it. And once all the due diligence is done, the requirements are done, account is open. But earlier it was much easier. Now there are some hassles, but it's done. कोई ऐसा issue नहीं है. It can be resolved. And guidance मिल सकती है, मिल जाएगी. Or we can always guide you online also and on mail also. What is important is that you have to
always let the person who's dealing you know your situation, what kind of investments you want. कुछ लोगों के पास होता है ना कि यार ये मेरे पास अभी ये 2 करोड़ रुपए है मुझे, लेकिन ये मुझे घर बनाना है 6 महीने बाद. I need this money after let's say 6 months. So then so that kind of investment you will have to make. Then it has to be in a safe scrape or something which is like which is not volatile. Because at times होता है कि उसकी volatility उस वक्त होती है कि जब आपको पैसों की जरूरत होती है. तो आपको फिर accordingly you have to plan your investments in a manner that you are able to exit without getting burnt. So if you know, this is our website and this is these are our numbers. बल्कि दूसरे numbers भी हैं हमारे, which I will, if you log on to the website, you are going to find it. This is my personal number. Thank you. ठीक है ना? Sohail, anything? Is it clear or you want? नहीं, बहुत अच्छा explain करके. This is exactly what I was trying to allude to. कि आपको ऊपर एक तो trust वाली मैं बात customer review देना चाह रहा था बाकी audience को कि you know I can tell you about the trustworthiness कि वो पाकिस्तान में जैसे एक इम्प्रेशन होता है ना कि पैसा डाला तो सबसे पहले पैसा गायब हो गया, you know, so that part is safeguarded. So I can speak volumes about the trustworthiness. दूसरी चीज होती है ease of doing the business. So you know, over the years that has improved tremendously. खास करके जब से वो ये CDC में पैसे वो चले गए सारे स्टॉक्स, वो जो मैनुअल वर्क था वो चला गया और दूसरा खत्म हो गया. हाँ, दूसरा जो आप लोगों ने वो ऑनलाइन कर दिया, उससे एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है एंड यू नो इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट. थैंक यू. मेरे ख्याल में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉन्टेक्ट साद. एक चीज और पूछना चाह रहा था, इफ यू अलाउ मी, आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम यू हैव, कि सेक्टर वाइज इस वक्त अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम सुनते हैं वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो हर तरह की खबरें दे रही होती है, तो उसमें तो कहते हैं कि जी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बड़ा बूम करने लगा है, तो कोई कहता है कि सीमेंट में करो, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है. I'll tell you what has happened. टेक्सटाइल सेक्टर में जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि चाइना का जो एरिया है जहाँ पर ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो बेसिकली दैट इज द कॉटन ग्रोइंग एरिया. एंड और वहाँ पर जो है वो यूएस का कहना है कि वहाँ पर उन्होंने यूज किया है उसको, क्या कहते हैं, लेबर जो है उसमें इंस्लेव्ड लेबर है बेसिकली. And that was just one way of cutting down China. तो वो बिजनेस जो है वो पाकिस्तान ट्रांसफर हो गया है, पाकिस्तान भी थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है. नाउ टेक्सटाइल में पोजीशन ये थी कि चाइना वाज 32% ऑफ द यूएस टेक्सटाइल imports. China was 32% and Bangladesh was more like 7%, 7.5%. India was close to 6.5%, and Pakistan was 2.9%. Now, if from 2.9%, if Pakistan needs to go to 3.9%, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि हम 1% भी बढ़ा सके. But companies are growing, they are putting up plants, they are expansion हो रही है दबा के, और this sector is going to do well. But अगर इनकी नियतें ठीक रहें, they are going to do very well. On the other side, cement, but this is a dull period for cement. सर्दियों में इनकी offtake कम हो जाती है, because in the north जब ठंड पड़ती है तो construction business वहाँ पर नहीं होता, तो offtake जो है local जो है वो कम हो जाती है. But I think अगर markets थोड़ी सी नीचे जाती हैं, जो नया पाकिस्तान के जो projects बन रहे हैं उसमें भी अच्छा खासा काम आएगा. तो cement and steel would be the next sector. On dips, one should buy on dips. जब भी market में dip आए,
इन सेक्टर्स में थोड़ी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए. इन गुड टेक्सटाइल्स ऑल्सो उन कंपनी का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, उन मैनेजमेंट्स का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, वन कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज. सर और भी कोई सवाल पूछ सकता है? अगर आप चाहते हैं तो इजाजत दे देता हूँ. सर बड़ी मेहरबानी. सर एक सवाल मेरा है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल. अगर सीडीसी अकाउंट कहीं पे हो और डोरमेंट हो और क्लोज ना हुआ हो, उसको क्लोज करना हो और आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ, जो सर सोहेल से आपकी इतनी तारीफ सुन रहे हैं, उसको एक्टिवेट करना हो तो कोई लंबा कोई प्रोसीजर है या इट्स जस्ट पहले तो कॉज ऑफ क्लोजर जो है वो पता चले कि क्या है. उसका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया होगा या कोई और ऐसा रीजन है, तो इस वजह से अकाउंट क्लोज नहीं होता, डोरमेंट हो जाता है, या वो उसे ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनी डिफॉल्ट से मतलब है शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया आपका, कोई भी है ना, नॉन कंप्लायंस की वजह से. तो फिर उसमें नया शनाख्ती कार्ड जमा करा देते हैं, देन इन्फॉर्म द सीडीसी, देन दे वर एक्टिवेटेड. व्हाटएवर इज द कॉज ऑफ क्लोजर दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड. तो वो ठीक हो जाता है. No, that is one part. If it is dormant because of some issue, but if someone wants to switch from company A to company B, like moving from one brokerage house to another brokerage house, that is not an issue. That is not an issue. All you need to do is give it in writing. You give a transfer letter. Okay. Thank you, sir. वो तो हो जाता है. सर मैं पूछना चाहता हूँ ये सेकेंडरी जो कैपिटल मार्केट है उसमें कोई प्रोटेक्शन या गारंटी होती है? लॉस सर हम भी सुनना चाहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? आपको आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही इसलिए बोला मैंने. अभी आई है? अभी आ रही है. अच्छा ओके थैंक यू. तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई प्रोटेक्शन गारंटी इन द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है against loss? Against loss there is no guarantee. इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती, तो ये कैपिटल मार्केट क्या गारंटी आपको देगी कि you're going not. You see factors change every day. एक आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और बम गिर गया, उसकी रेट ही आधे हो गए. What do you do then? You know, there's no guarantee. You have to assess your own risks. आपको जो भी देगा वो एडवाइस करेगा, गारंटी कोई नहीं कर सकता. It can only advise you. ठीक है, I get your point. Second question is कि जो कंपनीज के डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स होते हैं उनको जनरली फ्री मनी कहा जाता है. कंपनीज कॉल देम एज अ फ्री मनी. सो व्हाई डू दे कॉल देम एज अ फ्री मनी? It's not free money. It is taxed, heavily taxed. एक तो हाँ, कंपनी भी टैक्स लगता है, जो और जो डिविडेंड देती है कंपनी वो भी टैक्स होती है. एट सोर्स ही कट जाता है 15% फॉर फाइलर्स एंड आई थिंक इट्स अबाउट 25% फॉर नॉन फाइलर्स. वो कट जाता है. नहीं, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिविडेंड और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स बेसिकली ना. डिविडेंड वहीं से देगी ना कंपनी, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट इट मेक्स. डिविडेंड इज गिवन आफ्टर द टैक्स. हाँ, तो that's what I'm आपको saying. मिलेगा तो फिर आपको भी टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर. सर मैं ये नहीं, I'm not. Hold on, please. I'm not talking of the tax. I'm talking of the profit after tax. So companies call it free money. So if you don't know, that's fine. I have heard it, so that's fine. If you cannot answer this, that's fine. तो तीसरा सवाल ये है कि how to remove an intermediary between a customer, एक जो पर्सनल इन्वेस्टर है, दरमियान में जो इंटरमीडियरी है उसको किसी remove कर सकता है. इंटरमीडियरी यहाँ पर जो होता है इन द कैपिटल मार्केट is the brokerage firm. Can we remove that brokerage firm in any way? If I want to be an investor and मैं कहता हूँ कि मैं खुद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ. बिल्कुल आप कर सकते हैं, but then you have to do all the requirements of the exchange आप मीट करें. जो अपने डिपॉजिट्स है वो जमा कराएं वहाँ पर. whatever requirements जो रेगुलेटर की है वो पूरी करें.
then you can trade on your own account. You become a member, but you are not trading for others. You can only trade for yourself. जी सर, मैं यही कह रहा हूँ. SECP is the agency to apply. नहीं, SECP तो is just a regulator. जैसे पुलिस वाला है, वो दुकान का कारोबार तो नहीं करता, वो तो सिर्फ देखेगा रोड पे कोई चोरी तो नहीं हो रही. तो SECP is just a regulator. You have to apply to the stock exchange. Okay. What you will do is you will assume the role that a broker is taken, but that अगर आपका size इतना है that you can do it, तो आप investment का इतना size है, तो then it's viable. Otherwise it's not viable, because brokerage business itself is also not very viable. वो तो हम लोग बैठे हुए इतने साल से तो बैठे, otherwise most of the houses are losing money every month. You see, cost of compliances is very high. I get that. और मुझे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज समझ नहीं आया कि why एक उसी कंपनी का स्टॉक मौजूद है, why should I go for a future contract? I'll tell you why. आपके पास, let's say you want, आपके पास एक कंपनी का स्टॉक है जिसकी कीमत है let's say कि 10 रुपए, ठीक है, और आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 रुपए में आपके पास आएंगे 10,000 shares, ठीक है. When you buy and you want to trade short term, तो what you are going to do is कि आपको 25,000 लेने, तो आपने ये मार्जिन इतना इसका रखवाया और आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जिसके लिए आपको ट्रेड करने के लिए 15-20 दिन मिल जाते हैं या 1 महीना मिल जाता है, फिर 28 दिन मिल जाते हैं. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड you have to sell it to make a profit or a loss. You can trade more than what you have in cash on margin. ये होता है फॉरवर्ड का काम. आपको लगता है कि मार्केट बहुत बढ़ जाएगी, तो आप और आपके पास पैसे लिमिटेड हैं या पैसे आपके पास बाद में आने, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं. That future does, हाँ, exactly. क्या आप ऑप्शन की बात नहीं कर रहे सर? इज नॉट नहीं, मैं फ्यूचर मैं डिलीवरेबल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि ये जो डिलीवरेबल फ्यूचर 1 महीने बाद तो डिलीवरी आ ही जाएगी ना. फॉर एग्जांपल आपने आज फॉर एग्जांपल 8 तारीख है, 7 तारीख, 5 तारीख है, आपने एक स्टॉक खरीदा. अच्छा, इसका लास्ट डे ऑफ ट्रेड है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का. फॉर एग्जांपल लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ द, फॉर एग्जांपल इट इज द 27th of December. So by 27th of December either you are going to square the deal, या आप बेच देंगे नफे में या नुकसान में, or else on the 1st of January you will pay the full amount of the shares that you've purchased and you will get delivery of those shares. If you want to trade, you can trade in futures. ज़्यादा आपको ट्रेड करना हो तो you have an easy access to enter and exit. तो ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि ये उस डेट तक ये बढ़ जाएगा, अदरवाइज यू विल. पता नहीं होता किसी को, आप खरीदते हो. It is a guess. And after 5 minutes it at times it goes up in 5 minutes. और उसके बाद ऊपर चले जाता है, उसके बाद फिर 15 मिनट बाद फिर नीचे आ जाता है. तो आपने वो उस 5 मिनट को यूटिलाइज कर लिया तो यू आर अ विनर. एंड इफ यू डोंट, मे बी वो रिवर्स हो गया आपकी परचेज प्राइस से भी. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी, और देखना होता है कि अपना एक आप उसूल बना लें कि जी ये होगा तो मैं ये करूंगा. फॉर एग्जांपल कि एनीथिंग दैट आई बाय 1 रुपया बढ़ जाए तो मैं बेच दूंगा, इररिस्पेक्टिव. पता चला आपने बेचा और उसके बाद 2 रुपए और बढ़ गया. सो आपकी किस्मत. You see, उसके there are various factors because of which the market goes up. You see, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक तो फंडामेंटल्स होते हैं, फिर टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं. some big investor comes in. कभी कभार क्या होता है कि somebody has sold short और उसकी and his short position is very large and nobody is letting him square the position. तो फिर जो होता है कि वो उसको तो हर सूरत में ही अपनी पोजीशन जो शॉर्ट गया है उसको तो परचेज करके उसे कवर करनी है, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मार्केट बढ़ जाती है. तो इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जब आपको अंदाजा हो तो उस सूरत में जो इन्वेस्टर है, ही कैन लिक्विडेट सम ऑफ हिज स्टॉक्स और बाद में उसे दोबारा से नीचे लोअर प्राइस पे मिल जाएगा. तो
at a situation like that he can liquidate his stocks. लेकिन आपको पता होता है सर किसने भाटा मारा है? पता नहीं होता है, आप अंदाजा करते हैं, मार्केट नंबर्स देख के आप अंदाजा करते हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, वो मैं वो पते वाला गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, असेसमेंट सर सलाउद्दीन यू राइट। नहीं आपको असेस देख के करना पड़ता है कि इसमें इतना शॉर्ट हो रहा है, इसका रेडी फ्यूचर के रेट में डिफरेंस जो है वो बाज़ औक़ात फ्यूचर सस्ता है और रेडी महंगा, इसका मतलब है देयर इज अ शॉर्ट इन दिस स्क्रिप्ट, अदरवाइज फ्यूचर इज ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है सर। अच्छा सर ये होता जो है एक और चीज के, why is company kicked out of the stock market and how can a company avoid being kicked out? वो अपने एनुअल अकाउंट्स नहीं देती, स्टॉक एक्सचेंज की फीस नहीं पे करती, अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती है एनुअल अकाउंट्स की वो नहीं करती, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कंडक्ट करती, जो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी करती है उसको दे आर सस्पेंडेड, पुट ऑन अ suspension list and then they are मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सर एक टेल मी वन थिंग, मैं लेट्स से अपनी कंपनी खोलता हूँ, हाउ कैन आई लिस्ट माय कंपनी इन ए स्टॉक एक्सचेंज? उसका मैं आईपीओ करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई डू इट? इट्स वेरी सिंपल, आपको कंडीशंस क्या है उसकी? उस पे एक मिनिमम कैपिटल की कंडीशन है, ये सारी आप व्हेन यू गो ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट है ना, उसके अंदर आप जाएंगे, उसमें आपको तमाम डिटेल्स, उसके अंदर पूरा रेगुलेशन लिस्टिंग रेगुलेशंस मौजूद है, उसकी सारी कंडीशनैलिटीज मौजूद है, यू कैन लिस्ट कंपनियां। वैसे थोड़ा सा कैपिटल के हवाले से बताएं, कितनी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मेरा ख्याल है आई नीड टू सी इट, I think roughly वैसे बताएं सर, 1 बिलियन होगा या मेरा ख्याल है, क्योंकि you see 1 billion, when you okay, अंदाजा है 50 करोड़ से, क्योंकि पहले जमाने में तो बहुत छोटे कैपिटल की कंपनीज होती थी, लेकिन अब कॉस्ट ऑफ यू सी अगर आप लिस्टिंग करेंगे ना, लिस्टिंग की कॉस्ट ही आपकी सब्सटेंशियल हो जाती है, तो फिर वो पॉइंट नहीं होता कि आप छोटे कैपिटल की कंपनी को लिस्ट करवाएं, क्योंकि तो लिस्टिंग की कॉस्ट रफली किस रेंज में होती है? वो डिपेंड करता है आपका वकील कौन है, आपका कंसल्टेंट कौन है, उसकी फीस क्या है, वो सारी चीजें भी डिपेंड करती है ना। करोड़ों में होती है, लाखों में? हाँ नहीं करोड़ों में ही होती है। अच्छा, करोड़ों में? हाँ करोड़ में। वकील ही आप आजकल आपको पता है कि कितने पैसे ले लेते हैं। अच्छा। लॉयर्स आर एक्सपेंसिव, राइट, कंसल्टेंट्स आर एक्सपेंसिव, प्लस 1-2% ऑफ योर कैपिटल आपका, आप 3-4% आपकी कॉस्ट आ जाएगी सब मिला के, 3 से 4% ऑफ योर लिस्टेड कैपिटल। दूसरा ये बताइए, कराची स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी के अलावा और कौन कौन से एसेट क्लास जो हैं वो ट्रेड होते हैं? बेसिकली मेनली इक्विटी ही ट्रेड होती है, बाकी उससे आप हम नाम ले लेंगे तो उससे कुछ प्रैक्टिकली होता कुछ वो ट्रेड नहीं होता, कि मैं कहूँ कि बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, देयर आर लिस्टेड बट अच्छा हार्डली बीइंग ट्रेडेड, हार्डली उससे कोई परसेंटेज ही नहीं निकलती, इतना कम होता है। राइट। सो वो जो एक कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 100 इंडेक्स, उसमें इंडेक्स वगैरह पे होती है आपकी ट्रेडिंग वहाँ पे या नहीं? होती है वो भी, बट सब्सटेंशियल नहीं है, इट्स इनसिग्निफिकेंट। राइट। My advice would be to go into, this is a very lucrative market in a way that अभी भी price earning ratios are very, लेकिन सर ये सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे ये बताइए कि विदाउट options how can I make any strategy there? I mean it's then totally speculative then. नहीं, options तो speculation को ही के लिए ही तो बनाए गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शंस की परमिशन नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो आई कांट डू एनी स्ट्रेटजी देन देयर। नहीं, अब अभी तक पुराने जमाने में तो होती थी यहाँ पर, बट लास्ट 30 years आई थिंक 20 years खत्म हो गया, उससे पहले तो होता था, हिस्टोरिकली तो इट्स ऑलवेज बीन देयर, बट दैट वाज ओनली फॉर द फ्यूचर्स मार्केट। यू कैन hedge your positions by buying or selling a call and put option, जिसको यहाँ पर तेजी और मंदी कहलाई जाती थी वो। अच्छा, ओके। सर ये एक और मेरा सवाल जेब में आया कि ये जो सर्किट ब्रेकर की आपने बात की है, ये कोई जी कंट्रोल नहीं लगता है कि जैसे मतलब इतनी लिमिट होनी चाहिए और उसके दरमियान जब तक तमाम सेटल नहीं होंगे ट्रेड, तो यू हैव टू, इज इट नॉट काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल? मैनिपुलेशन नहीं है इसको, ये दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट है, वो लेट्स से कि 100 रुपए का है,
ठीक है, हमने 10% का सर्किट ब्रेकर लगाया और 110 पे उस पे रोक दिया, क्योंकि जिसने बेचा है वो जब तक डिलीवर नहीं करे, सेटल नहीं करे, मार्केट का रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट रिस्क, ये सारे सर्किट ब्रेकर्स जो है ये दे आर पुट इन प्लेस। अच्छा, ये सर्किट ब्रेकर सर यहाँ पर हैं क्या, मतलब दूसरी एक्सचेंजेस में होते हैं, मैच्योर एक्सचेंज? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में भी है। पहले हमारे यहाँ नहीं थे, फिर हमने बाद में लगाए ये। आई थिंक हमने शायद, आई वाज ऑन द बोर्ड जब हमने लगाए एक्सचेंज ये। दिस वाज 1980। आई थिंक अपसाइड पे 5% है, डाउनसाइड पे शायद 2.5% है, दोनों। नहीं, अच्छा, 7.5% है, 7.5%। आई थिंक इट्स बीइंग रेज्ड टू 10%। हाँ, मिनिमम ऑफ 1 रुपी। अगर कोई फॉर एग्जांपल 1 रुपए का शेयर है, तो उस पे अगर वो 1 रुपया बढ़ेगा तो इट इज व्हिचएवर इज हायर, मिनिमम ऑफ 1 रुपी or 5% था, or minimum of 1 rupee and 7.5%, whichever is higher. Right. सर ये पिछले क्रैश पे, सॉरी, आप गो अहेड प्लीज। थैंक यू सर। ये बताइए, एक तो देखें इक्विटी ट्रेडिंग है जो ऑब्वियसली बहुत रिस्की है और हम जैसे लोगों ने शायद ना टाइम और नॉलेज ना हो। दूसरा जनरली जो यहाँ पे कॉमन चीज होती है कि मेरे पास लेट्स से 10,000 रुपए मैंने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दी और म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान में इस तरह क्या सिलसिला है? बहुत म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पर। अच्छा, ओके। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं या मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा? नहीं, वो म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं, और दे आर, सम ऑफ देम आर लिस्टेड आल्सो। बट इफ यू वांट टू बाय अ सर्टेन म्यूचुअल फंड, जी, वो मुख्तलिफ किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं। सम आर ट्रेडेड ऑन द मार्केट, राइट, that are, those are the closed end mutual funds, and one are open end mutual funds. Open end mutual funds cannot be traded on the market because उसकी price discovery हो नहीं सकती, क्योंकि वो fundamentals उसके change होते रहते हैं। So for that you need to go to that उसकी जो sales department है, वो बल्कि आप सिर्फ उनको call करेंगे तो उनके representative आपके पास फौरन आ जाते to take your money, बिकॉज उनका बाइंग और सेलिंग का रेट होता है, वो इस तरह होता है कि उनका बाइंग सेलिंग रेट इस तरह डिटरमिन करते हैं कि उनकी टोटल इक्विटी होती है, फिर उस पे वो हेयर कट एक लगाते हैं, एंड देन यू नो दिस इज हाउ इट्स डन। राइट। तो सॉरी आप सर हम भी और लोग भी सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं? पूरा हो गया सर। The floor is open. एक सिर्फ कमेंट देना चाहता हूँ सर्किट ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम जब टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई, सर्किट ब्रेकर ऑफ हुए, तो उसमें उनका प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी था कि वॉल्यूम बहुत खरीदा गया और उस वक्त उन्होंने जो है वो, तो वॉल्यूम की कंसिडरेशन भी है पाकिस्तान में भी। सर्किट ब्रेकर पे कोई वॉल्यूम की कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, नहीं, उसमें कोई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, असफर यार कनाडा से। तो मेरी नॉलेज बहुत कम है तो कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेरा सवाल था कि आप लोगों की और द लास्ट फ्यू इयर्स कोई डे ट्रेडिंग इंडस्ट्री कोई डेवलप हुई है पाकिस्तान में? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। और आई डोंट नो, I didn't get your question. Day trading इंडस्ट्री है कोई पाकिस्तान में जो लोग जो है वो जैसे करते हैं? देयर इज अ होल ग्रुप इंडस्ट्री है जो कि फुल टाइम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लोग करते हैं। So it has proliferated in Pakistan. There is an industry there. Day trading in the equities market की आप बात कर रहे हैं ना? जी। वो तो it's always been here. It's always been there. बल्कि बहुत ज्यादा है यहाँ पर। पहले तो ये था कि अब तो फिर भी डिलीवरी का रेशियो ज्यादा है। पहले जमाने में आई थिंक 2005 and 6 में it was just 5 to 10%. The rest 70-80% was just day trades. I see. और now it's gone up. It's gone up much higher. 30-40% पे चला गया। तो आपने पहले बात की थी कि जो आपकी जो ब्रोकरेज फीस जो है वो कम हुई है, एक स्लाइड पे आपने शो किया था। जी बहुत कम हुई। आप लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर डे ट्रेडिंग इंक्रीज हुई है तो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ?
नहीं, डे ट्रेडिंग कम हुई है ना। डे ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ ना, पहले जमाने में जबकि कमीशन रेट्स भी ज्यादा थे, अब से 5 गुना ज्यादा थे, या बल्कि इन सर्टेन केसेस 10 times more, and cost of doing business was maybe 10 times less or 5 times less. दोनों इट्स डबल जगह पे मार पड़ी है। इसी वजह से आप देखें 300 हाउसेस क्लोज डाउन, बिकॉज कोई कितने अरसे तक कोई नुकसान बर्दाश्त करेगा। तो मार्केट हैज बीन गोइंग अप फॉर द लास्ट 10 years सर। तो नहीं, वो बात ये है कि यू सी for the brokerage business to survive, you need a certain amount of money to, क्योंकि compliances बहुत ज़्यादा है। We have to, in order to do the compliances, you need people who can do those compliances, and those are not cheap. ठीक है ना? तो ये सारी issues होते हैं। That is why 300 houses closed down in the entire industry during last 2-3 years. अब गिनती के चंद रह गए। अब इंशाल्लाह मार्केट चलेगी तो फिर लोग आ जाएंगे और दोबारा नए लोग आ जाएंगे। मार्केट ऑलवेज नीड्स फ्रेश ब्लड। राइट। आप लोग का उधर कैपिटल गेन्स टैक्स रेट कितने हैं सर, और इज इट एनी डिफरेंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज अपोज्ड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो जीरो हो जाता है। अच्छा। हाँ, वरना अदरवाइज इट इज 15%। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है उसके लिए 15%। और डिविडेंड का टैक्स रेट कितना है? डिविडेंड का भी 15% है। मुदारबास वगैरह के लिए शायद कुछ कम है, बट द रेस्ट इज 15%। राइट, थैंक यू सर। सर ये बताएं आजकल कमीशन कितना है? पहले तो मुझे याद है 10 पैसा होता था एक जमाने में, आज से 15-16 साल पहले। वो मिनिमम होता था ना कि वो फ्लैश स्लैब्स थे 0 to 1999, फिर 1999 से 29.99, देन फ्रॉम 30 to 49.99, इस तरह स्लैब्स ऊपर बढ़ते चले आते थे। इट वुड गो टू ₹1.75 पर शेयर। अच्छा। अब तो कम है। अब तो छोटे स्क्रिप्ट्स पे इट्स मिनिमम इज 3 पैसा। अच्छा। एंड 0.15%, whichever is higher। ये तो मिनिमम, इससे कम हम चार्ज नहीं कर सकते, अदरवाइज वी विल बी नॉन कंप्लायंट। ठीक। तो वो वेरी करता है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, जो है ना, वो नेगोशिएट लोग कर लेते हैं। जो जिसकी ज्यादा ट्रेडिंग होती है उसी कस्टडी चार्जेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत सारे चार्जेस तो ब्रोकर खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि व्हेन ही गेट्स गुड बिजनेस। बट अदरवाइज ये इन रेट्स पे भी सर्वाइव करना आसान नहीं होता, बट अगर वॉल्यूम्स हैं तो फिर ठीक होता है, फिर कोई इश्यूज नहीं होते। अच्छा, योर क्वेश्चन वाज व्हाट आर द कमीशन रेट्स? जी, मिनिमम मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम इज 0.15% और 3 पैसा, whichever is higher। ठीक है। And on the upper side, the upper lock is 2.5%। अच्छा, ओके, ठीक है ना? उससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। सही। One last question if you can answer, sir। ये जो हम सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में स्पेशली, वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, वो क्या है? वो उसमें कितनी हकीकत है, क्या है सर? देखिए, मार्केट्स को मैनिपुलेट सारी दुनिया में करते हैं और लोग करते हैं पर्सन, और जो जितना बड़ा मैनिपुलेट करता है उतनी बड़ी हार वो एंटिसिपेट करता है। वो इसी मैनिपुलेशन में कोई विनर नहीं निकलता। इन्वेस्टर इज ऑलवेज अ विनर। जो स्पेक्युलेटर होता है ना, उसको इन्वेस्टर हरा देता है मैनिपुलेटर को। अगर किसी ने कोई स्क्रिप्ट को फॉर एग्जांपल 10 रुपए से मैनिपुलेट कर करके वो 50 रुपए ले गया, और जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है इतनी देर से, उसने सारा माल अपना डंप कर दिया, वो लेके किधर जाएगा? वो बेचने तो उसे वापस इसी फ्लोर पे आना होगा ना। वो किधर बेचेगा, किसको बेचेगा? ही विल बी डम्प्ड विद दैट। तो मैनिपुलेटर मैंने देखा है इन माय 38 years एट द एक्सचेंज, व्हाट आई हैव सीन इज मैनिपुलेटर की 90% हार होती है। अच्छा, 90% हार के गया मैनिपुलेटर। हमेशा जीत होती है इन्वेस्टर की। लेकिन ये जो बड़े बड़े चैंपियन बैठे हैं, इनके तो बढ़ते जा रहे हैं सर पेट। नहीं, वो तो बढ़ते हार होती है। नहीं, वो मैनिपुलेटर नहीं होते ना, वो इन्वेस्ट भी करते हैं ना। वो आमने सामने 10 किस्म की चीजें वो कर रहे होते हैं ना।
अच्छा, वो अपनी रिसर्च भी कर रहे होते हैं, जो सेक्टर्स ठीक होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। जो बने हैं वो इन्वेस्टमेंट से बने। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन भी होती, बट फॉलोड विच इज सपोर्टेड बाय research and market information or insider information, whatever you may call it, insider trading. अच्छा, एक और सवाल, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। देखें, इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पर जब पकड़ा जाता है तो उसकी बड़ी तरह से खिंचाई होती है और केसेस आते रहते हैं सामने यहाँ पर कि इनसाइडर ट्रेडिंग उसने की थी और उसको पकड़ा, उन्होंने रगड़ के रख दिया। पाकिस्तान में कोई आप मिसाल दे सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई और एससीसीपी ने एक्शन लिया और उन्हें पकड़ के उस बंदे को रगड़ दिया? नहीं, एससीसीपी जो एक्शन लेती है ना, वो जो शरीफ ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन ले सकती है। और जो बड़े होते हैं ना, उनको तो फिर प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया जाता है ना कि उनके जो चेयरमैन को, हाँ भाई इसका क्या करना है। This is off the record, but this is what practically happens here. We understand. This is what practically happens in this country. सही। सर साहब, मैंने एक सवाल पूछना है, वो ये कोई जो आपका डॉल्मेन मॉल वाला था और वो मीट वन वाला था, जब इनकी आईपीओस खुली थी तो इनकी वर्थ कोई 20, 25 या 30 रुपीस थी, लेकिन जो आईपीओ खुली वो कोई 95 या पता नहीं, बिल्कुल 105 तक रेट चला कोई। तो वो कहते हैं कि जब आपकी वर्थ होती है उससे ज्यादा आईपीओ खुल कैसे गया, और उसको क्यों नहीं किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चैलेंज किया? उस वक्त करना चाहिए था। आई स्टिल फील कि वो करना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो लोगों के बहुत लॉस हुआ, तो 10-12 के ऊपर आ गए थे लोग। नहीं, अब हाँ बिल्कुल, वो तो 10 रुपए पे आ गया था, अभी शायद 18 रुपए है, बट एंड दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। कोई इतना नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स, मतलब जो सिक्योर रेगुलेटर है, उसने क्या चीज देखी? मतलब उसने किसी को, जो अभी जैसे सलाउद्दीन पूछ रहा था, मतलब फिर व्हाट इज द रेगुलेशन? मतलब वो तो वही आपकी वाली बात है, जो माइट इज राइट। भाई उन्होंने यही किया ना उस वक्त यही किया। ये तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। पहले जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, ये तो रिसेंटली इन्होंने अलाउ किया। पहले तो जब इस तरह के बुक बिल्डिंग वाली आईपीओस नहीं होते थे ना, पहले आईपीओ होते थे जनरल पब्लिक, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पब्लिक इन्वेस्ट करती थी, छोटे छोटे सब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे, उसमें भी बहुत काम होते थे, बैंकर्स इन्वॉल्व होते थे। उस वक्त तो फिक्टिशियस अकाउंट्स भी बहुत खोला करते थे। अब तो ये सब चीजें नहीं होती, सब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है ना, मतलब एक किसी चीज की वर्थ 10, 15 या 40 रुपए है। हाउ कम आईपीओ एकदम जी वो अनाउंस करता है जी 95 या 100 रुपीस के ऊपर आप वो नहीं अनाउंस करता ना, ये आप करते हैं, हम करते हैं, और जितने इन्वेस्टर्स आते हैं वो अपनी बिड बढ़ाते चले जाते हैं। तो दैट इज हाउ द प्राइस गोस अप। नहीं, वो बढ़ाए, लेकिन इसकी जो रेगुलेटर एक लाइन लगाता है ना कि जिसकी वर्थ ही 30-40 रुपए है, वो एकदम से कैसे? वो डेफिनेटली होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल भाई इसके जो बुक्स हैं और ये इसमें फ्यूचर ग्रोथ, चलो ग्रोथ का एलिमेंट दे दे, या जो बुक्स है उससे कोई 10-20% ऊपर तक अलाउ करे, उसके बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। आपने एक चीज नहीं, तो इसकी वजह बहुत बड़ा लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, और वो सारे चीख पुकार करते रहे, लेकिन कोई किसी ने सुनवाई नहीं। हमने खुद नुकसान किया इन चीजों में, और हमारे कस्टमर्स को हम मना करते रहे, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज वेरी हाई प्राइस। कहते नहीं आप डालें, बिड डालें। अब हमें तो नहीं, बहुत सारे स्क्रिप्ट समझ में नहीं है, बट वन गेट्स कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। वो मार्केट का ट्रेंड देखते यार, हमने अभी 70 में नहीं लिया, अभी तो 80 हो गया, 80 में नहीं लिया 90 हो गया। तो बट यू शुड ऑलवेज गो ऑन द फंडामेंटल्स। उस चीज को छोड़ देना चाहिए, वरना किसी वक्त मार पड़ जाएगी बहुत। अच्छा, दूसरा ये बताएं सर, ये जो लाइक दीवान सलमान फाइबर या ये दूसरे लोग हैं, ये क्या डीएफएल वगैरह जो लिखा हुआ आता है, ये डिफॉल्टर होते हैं क्या? ये कैन दे कम बैक टू, या बस जो है वो गए तो गए? नहीं, दे कैन कम बैक, दे कैन रिमूव द कॉज ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्टर लिस्ट में आ रहा है, और वो तो डिफॉल्टर लिस्ट में बाज कंपनीज ट्रेड होती है, दे आर ट्रेडेड। ये जैसे दीवान सलमान फाइबर वाले हैं, ये पता नहीं कौन है, 2-3 को मैंने नाम देखे, वहाँ डीएफएल लिखा होता है। ये सर दीवान सलमान फाइबर नहीं, ये
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी डिफॉल्टेड कंपनीज ट्रेड करती हैं, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान स्टॉक। वो उनके कितने डिफॉल्ट्स हैं, किसी ने एजीएम नहीं की, किसी ने लिस्टिंग फीस नहीं भरी एक्सचेंज की, कोई ना कोई रीजंस होते हैं, दे आर मोर देन, होता है ना कि नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स अगर लेट्स से कुछ एक्स से ज्यादा बढ़ जाए तो देन दे आर सस्पेंडेड। लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर को इंटीमेट तो नहीं किया कि किस वजह से डिफॉल्ट हुई। It is listed on the bourses के ये जो तुम स्टॉक ले रहे हो ये पिंक लिस्ट पे है, आर यू रेडी टू बाय इट? तो फिर वो आपकी वार्निंग के बाद आप ले लेते हैं, तो कसूर किसका हुआ, तुम्हारा हुआ या बोर्स का हुआ? वो तो लिखा होता है डिफॉल्टर काउंटर पे, उस पे आता है लिखा हुआ यहाँ पे गेट्स ऑन द डिफॉल्टर काउंटर। बट हम लोग चांस लेते हैं, कभी 1-1 रुपए वाला स्क्रिप्ट होता है जो एक के 2 रुपए बन जाते हैं, तो यू मेकिंग 100% गेन। यू सी आपने लाख शेयर लिया, वो पता चला कि 3 रुपए बढ़ गए, तो 1 लाख रुपए लगा के वो 4 लाख रुपए हो गए आपके इन नो टाइम। तो और उसमें डाउन साइड ये होती है कि यार एक रुपए का है ना, 1 रुपए ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पीपल टेक चांस इन दैट, इस वजह से ट्रेड होता है, उसमें स्पेकुलेटर्स घुस जाते हैं। Right, दोस्तों, I will drop. You may continue. Thank you very much for. Okay, thank you, Sohail. Thank you. Assalamu alaikum. Okay. Walaikum salam. जी अस्सलाम वालेकुम साद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। Yes. ये जो आईपीओ में जो प्राइस सेट होती है पर शेयर की, तो दिस प्राइस इज ऑलवेज इन इक्विवेलेंस टू द इक्विटी द फर्म इज ऑलरेडी होल्डिंग, ठीक है ना? ये तो नहीं हो सकता? हाँ जी। नहीं, ये जो होता है ना, फॉर एग्जांपल प्राइस है एक कंपनी का, फॉर एग्जांपल कैपिटल है लेट्स से के 1 बिलियन, ठीक है? हाँ जी, ठीक। उसका इट हैज अ प्रॉफिट ऑफ एक्स प्रॉफिट है, एंड एससीसीपी हैज अलाउड देम टू प्राइस के आईपीओ एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है? वंस दिस आईपीओ इज डन, व्हाट हैप उसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा होता है आईपीओ, उसमें पीपल कीप ऑन बिडिंग। तो अगर वो बिड्स ज्यादा आनी शुरू हो जाती है तो उससे फिर ऊपर बिड्स आनी शुरू हो जाती है, देन द प्राइस कीप्स ऑन गोइंग अप टिल टाइम दैट जो टॉप के लोग होते हैं उनको फिर वो शेयर्स मिल जाते हैं। आई सी, आई थॉट के ऑलरेडी जो इनिशियल प्राइस जो फिक्स होती है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द इक्विटी द फर्म इज ऑलरेडी होल्डिंग, लेट्स से अगर 2 बिलियन की उसकी इक्विटी है तो यू कैन ओनली गो फॉर आईपीओ ऑफ 2 बिलियन के लिए हो जा सकता है। एग्जैक्टली, नहीं उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, बट वो 2 बिलियन जो है वो 2 बिलियन जो है वो 8 बिलियन में बिक जाता है ना। अच्छा, इक्विटी तो 2 बिलियन की प्राइस, मतलब आपने 10 रुपए वाली चीज जो है अगर फॉर एग्जांपल आपने 30 रुपए में खरीदी, तो आपकी वो 2 बिलियन जो है अगर जो आप बेचने के लिए आए वो तो 6 बिलियन में बिकेगा आपका। लेकिन आईपीओ में एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि आईपीओ में जो आपने एक शेयर प्राइस फिक्स की है, जो आप इनिशियली परचेज करते हैं थ्रू दी बैंक, वो तो उसी प्राइस पे होता है जो उससे प्राइस फिक्स की होती है। नहीं फिक्स, वो तो उसके बाद जब उसकी ट्रेडिंग शुरू होती है उसके बाद ऊपर नीचे होता है। नहीं अब इनिशियल नो अब नहीं ऐसा होता है। अच्छा, नॉट इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब आप बैंक के थ्रू करते हैं ना उसमें फिक्स होता है वो प्राइस। वो आईपीओ पे जो प्राइस डिटरमिन हो जाती है ना, बैंक में भी उसी प्राइस पे फिर आपको मिलेगा वो। अच्छा, उसमें फिर अगर बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बैलेटिंग होगी, अगर ओवर वो सब्सक्राइब हो गया तो फिर आपकी जो है ना वो बैलेटिंग से आपको मिलेगा, अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो दैट मींस कि द बैंक इज गोइंग टू पे फॉर दैट, इज इट? नहीं, बैंक इज नॉट गोइंग टू पे फॉर इट, यू आर गोइंग टू, आपसे पैसे तो 100% वो पहले ही ले लेगा ना। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। वो तो आपसे पैसे पहले ले लेगा, जब अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, अदरवाइज वो पैसे रख लेगा, वो उस कंपनी को भिजवा देगा। नाउ ये जो आपका सवाल था ना, तो इसको ये भी मैं लेट मी क्लैरिफाई दिस। जी फॉर एग्जांपल उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं देखा, आई जस्ट मिस्ड द लिंक। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं दिस जी कि अगर लेट्स से कि 1 बिलियन का आईपीओ है, ठीक है ना जी, दैट मींस कि वो शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, ठीक है जी, ठीक है ना, 100 मिलियन शेयर्स हैं। अच्छा, एट ये कितने 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू, राइट? नाउ आईपीओ जो है ना, ये बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से जाता है, और उसमें से लेट्स से आईपीओ में उसने ऑफर किया लेट्स से 900 मिलियन। नाउ 900 मिलियन जो है वो जो बिका,
जो उसकी जो कट ऑफ प्राइस थी वो बनी फॉर एग्जांपल 30 रुपीज, तो वो 1 बिलियन जो है वो 10 रुपए के बजाय 30 रुपए में बिका, तो वो 3 बिलियन में बिका। नाउ जो बैलेंस बच जाएगा ना, जो बैंक के थ्रू ऑफर करेगा, वो 10 रुपए में नहीं होगा, वो भी 30 रुपए में ही होगा ऑफर। अच्छा ठीक। दिस इज हाउ ये प्राइस डिस्कवरी, इस स्क्रिप्ट की प्राइस डिस्कवरी आईपीओ में हो गई। अच्छा ठीक है। सही। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, अगर आपने इन केस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, so that means you should be dependent on the dividend. Dependent on dividend, as well as you can also, what you can do is you can also not only trade in the market. Agar if the price goes up, आप बेच दीजिए, and then purchase some other shares, उसको बेच के some other बेचे, या अगर वो अगर किसी स्टेज पे बढ़ जाए, आपने बेच दिया, ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाए, आप बेच दें और अब दोबारा भी खरीद सकते हैं at a lower price. ठीक है। That's right. These were the two questions from my side. Thank you, Saad. Okay, thank you, sir. अच्छा वैसे नहीं हुआ, टीम से नहीं हुआ। Any further question from any participant? If you have any queries या कोई ऐसी चीजें हो ना, तो what you can do is that you can always send them to me on my email or WhatsApp. You have the number here. You can send the queries. अगर इससे related कोई चीज हो ना, तो that you're not clear, just send me the questions so that I can, एक आध दिन में I'll just get back. चलें सर, अगर किसी और का नहीं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दे दें अगर मुमकिन हो तो। ये बताइए, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का कुछ है इम्कान पाकिस्तान में ट्रेडिंग का? मेरा ख्याल अभी नहीं है, अभी उस पे नहीं है, क्योंकि इस पे लोगों ने यहाँ पर काम काफी होता रहा है, पहले भी बहुत काम हुआ है क्रिप्टो करेंसी, बट आई डोंट थिंक But I understand there was a news today कि केपी के असेंबली ने क्रिप्टो करेंसी की उसकी परमिशन दे दी है, केपी ने। अच्छा, I don't know what does that mean. आज कहीं मैंने खबर पढ़ी है किसी जगह। वो ये पहले भी सिलसिला चलता रहा है, ये आज से 3 साल पहले, 2 साल 2017 to 2018 उसमें काफी रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्टिवली दे वर ट्रेडिंग, बट that was not official. तो अभी जो लोग करते हैं सर, वो कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू दे डू इट? वो हाउसेस हैं जो करते हैं ना, वो उनका अरेंजमेंट किसी और के साथ है, वो उनका सेटलमेंट कोई और करता है। तो इज इट वो लॉफुल है कि नहीं है, मतलब पाकिस्तान में अगर इस तरह कोई करता है? लॉ नहीं है, ये अनलॉफुल है, बट होता है काम। अच्छा, ओके। अगर हो जाए, रेगुलेशंस बन जाए तो ठीक है, वो फिर हो जाए। अगर रेगुलेशन बनाने होंगे ना, बिल्कुल सारे अंडर SECP आएगा वो। सही। If there are any other questions, so I will be happy to answer. Otherwise, you can put those questions on WhatsApp. I will gladly revert back to you. ठीक है। Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for your precious time. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, sir. So kind of you. Okay. Appreciate it. Thank you so much. Allah Hafiz.